एबे देखिबा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहले हमें कॉमनली बुझिबा व्हाट इज सो फार नोन अबाउट द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज so far known about the problem under investigation। आमे जहाँ भी गोटे रिसर्च प्रॉब्लम बा गोटे प्रॉब्लम फाइंड आउट करबा फॉर्मुलेट करिचे ता विषय रे एपर्यंत कौन नॉलेज अच्छी बा कौन इनफॉरमेशन अच्छी से जिनसटा को जानिबा ही रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। जमती कि आमे गोटे एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रही एजुकेशनल प्रॉब्लम नहीं एजुकेशनल प्रॉब्लम जमती कि आमे नेले वुमेन एजुकेशन। तो ये अकॉर्डिंग आमे ऑलरेडी कौन इनफॉरमेशन अच्छी सेटा देखिबा वुमेन इनफॉरमेशन केते परसेंट होउची सॉरी वुमेन एजुकेशन केते परसेंट हेची सेटा देखिबा को एरिया रे वुमेन एजुकेशन हाई अच्छी को एरिया रे वुमेन एजुकेशन रेटटा लो अच्छी से जिनसटा जानि परिबा। तो ये डाटा सब आम कलेक्ट करवा जमती कि डिफरेंट सोर्सेस रु डाटा कलेक्ट मध्य करहब से अकॉर्डिंग। तो लिटरेचर रिव्यू इज अ रिटन समरी ऑफ जर्नल आर्टिकल्स books and other documents that describes the past and current state of information on the topic of your research study। जो रिसर्च स्टडी आम करवा जो प्रॉब्लम टाक नहीं जहाँ ऊपर रिसर्च करवा तार पास्ट इनफॉरमेशन कौन बा एक्सपीरियंस से हिसाब रे कौन अच्छी बा ता ऊपर अदर आर्टिकल्स रु आम जापर जर्नल्स फर्दर बा फ्यूचर सॉरी पास्ट रे जो रिसर्च है कौन फाइंडिंग्स मिली आ ऊपर जो रिसर्च है आ करेंट सिचुएशन तार कौन अच्छी से इनफॉरमेशन टा आम पाई थ्रू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो एबे हमें देखिबा नीड ऑफ द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तार नीड कौन रही फर्स्ट नीड है एस्टाब्लिशेस कंटेक्स्ट। एटा कंटेक्स्ट एस्टाब्लिशमेंट पाई दरकार जमती कि गोटे रिसर्च आम नहीं तार बैकग्राउंड कौन रहिबो बा बैकग्राउंड कौन अच्छी सेटा आम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर रु जान परिबा जोटा कि हेल्प टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज और हाउ करेंट स्टडी फिट्स इनटू इट। देन आइडेंटिफाई गैप्स। ऑलरेडी जो स्टडीज गुड़ाक हेइची ऑलरेडी स्टडी सेथुरु रिसर्चर कौन कर परिबो आइडेंटिफाई गैप्स और एरियाज दैट नीड फर्दर एक्सप्लोरेशन। से स्टडी रू ही जानि परिबो कोठी बा को एरियाटा फर्दर एक्सप्लोर करबा को पड़िबो गैपटा ही आइडेंटिफाई कले बा से पर्टिकुलर एरियाटा ही से एक्सप्लोर कर परिबो। देन अवॉइड्स डुप्लीकेशन। इट एंश्योर्स दैट द रिसर्च डज नॉट डुप्लीकेट प्रीवियस स्टडीज सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेस। ऑलरेडी आम वुमेन एम्पावरमेंट उपर बहुत गुड़े रिसर्च हो सारी आम पुणी तापर जदि रिसर्च करवा बा डुप्लीकेशन आसुची तो तार वैल्यू किछि नहीं मीनिंग एते मिलबनी जो एरिया रे हमरो प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन मिल पारनी बा करेंट सिचुएशन रे प्रॉब्लम चली तार सॉल्यूशन रो आम पाई पारनांती किंतु पाइबा पई ट्राई करचंती तारी ऊपर ही कोन करबा दरकार हमको रिसर्च करबा दरकार सेटा लिटरेचर टाको रिव्यू कले ही जानी हबो
आर्टिकल्स पढ़ी बुक पढ़ी न्यूज मैगजीन्स इंटरनेट रू जानी हबो तो सेठी डुप्लीकेशन टाको अवॉइड करी हबो देन इन्फॉर्म्स मेथोडोलॉजीज तो मेथोडोलॉजी आउ अप्रोच कौन हवा दरकार गोटे सक्सेसफुल स्टडी पाई बा प्रीवियस स्टडी पाई जदि आमे देखिले फाइंडिंग्स मिली गोटे प्रॉब्लम रो रिसर्च प्रॉब्लम रो फाइंडिंग्स मिली तो सी कोठी से मेथड कौन सब यूज होईची मेथड्स कौन यूज होईची एंड अप्रोचेस कौन सब फॉलो कराई से सब से थ्रू रे ही आमे जानि परिबा को मेथड रो यूज कर परिबा को अप्रोचेस हमें नहीं परिबा करेंट रिसर्च पाइका देन प्रोवाइड्स थियोरिटिकल फ्रेमवर्क कोटे प्रोवाइड करछि आइडेंटिफाइंग एंड अप्लाइंग रेलेवेंट थ्योरीज एंड मॉडल्स टू करेंट रिसर्च देन एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग से जो प्रेजेंट टॉपिक ऊपर अंडरस्टैंडिंग टाको एनहांस करियो थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर और रिलेटेड लिटरेचर जो थरे कि मीनिंगफुल रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मेशन करियो हाइपोथेसिस क्रिएट करियो देन एस्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी एटी कौन हम गोटे थरो रिसर्च बा लिटरेचर रिव्यू जितेबाला गोटे रिसर्चर करुच्ची से से डेमोन्स्ट्रेट कौन कर नॉलेज आ तार गोटे बेटर अंडरस्टैंडिंग आसीपर जोटा कि क्रेडिबिलिटी टाको तार एस्टाब्लिश कर देन सपोर्ट्स फाइंडिंग गुड़ाक सॉरी करेंट स्टडी जोटा करबा जोटा प्रीवियस रिसर्च संगे रिलेटेड से अकॉर्डिंग कौन कर परिवो कंपेयर बा कंट्रास्ट कर परिवो नॉलेज टाको थ्रू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जेतेबेले से कौन कला नेट रे गोटे जिनस से अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन खोजुची बा से पाईगला इन्फॉर्मेशन तो पास्ट रे तार सिचुएशन कौन थिला एबे प्रेजेंट सिचुएशन कौन अछि सेटा को से कंपेयर कर परिवो एंड कंट्रास्ट मध्य कर परिवो तार डिफरेंस कौन से अकॉर्डिंग से कौन कर परिवो सपोर्ट्स फाइंडिंग से अकॉर्डिंग फाइंडिंग मध्य खोज परिवो देन गाइड्स डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा केमती इंटरप्रिट करिवो कंक्लूजन केमती ड्रॉ करिवो तार गोटे रेफरेंस से पाई परिवो फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर तो यहाँ थिला नीड ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नीड कौन सब रही एबे देखिबा हमें सोर्सेस को सब सोर्स रु हमें कौन कर परबा रिव्यू कर परबा तो मेनली एठी सोर्सेस को टू टाइप्स रे डिवाइड कराई छि वन इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स तो प्राइमरी सोर्सेस टा कौन रिसर्च रिपोर्ट और डिसर्टेशन इज रिटन बाय द पर्सन वनसेल्फ जी निजे कौन करूची जेतेबेले निजे रिसर्चर जेतेबेले कौन करूची रिपोर्ट टा प्रोवाइड करूची बा डिसर्टेशन दउची सेटा को हमें प्राइमरी सोर्सेस बोली कहबा निजो रिपोर्ट रू निजे नॉलेज जेतेबेले गेन करबो जेतेबेले अन्य जने कौन करूची रिसर्च करूची किंतु आउ जने कौन करूची रिपोर्ट प्रोवाइड करूची सेतेबेले सेटा को हमें सेकेंडरी सोर्स बोली कहबा जड़े रिसर्च कला किंतु द पर्सन हु इज राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट इज डिफरेंट जड़े रिसर्च रिपोर्ट लिखला एठी टू पर्सन हो गले दीटा पर्सन अलग अलग पर्सन हो गले द पर्सन हु कंडक्टेड रिसर्च आ गोटे द पर्सन हु इज राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट तो ये यहाँ को आम सेकेंडरी सोर्सेस बोली कहबा तो ये सोर्सेस रे आम डाटा कलेक्शन कोड करबा जेतेबेले निज निज रिपोर्ट रो डाटा कलेक्शन करछे प्राइमरी अन्य जने जेतेबेले रिपोर्ट देछि बा जने से रिसर्च करिछि किंतु आउ जने रिपोर्ट दउछि सेठी हला सेकेंडरी अन्य जनक रिसर्च रो जेतेबेले आम रिव्यू करबा रिलेटेड लिटरेचर देन
आ गोटे सोर्स है इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डाटाबेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस रू आमे बा इंडेक्स रू तार जानी परिबा रिजल्ट कौन रही बा सिचुएशन कौन अच्छी देन एजुकेशनल रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम जोटा को आम एरिक बा ERIC बोली कहूँ तो यहाँ यूएस रे इटा गोटे तंकर सिस्टम अच्छी जो थ्रू यही रिलेटेड प्रॉब्लम्स बा एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तार सॉल्यूशंस रिपोर्ट कौन अच्छी फाइंडिंग्स कौन मिली से सब गुड़ाक मिल पार देन स्टैटिस्टिकल सोर्सेस स्टैटिस्टिकल सोर्सेस है जो इनफॉरमेशन जहाँ भी आमर स्टैटिस्टिकल इनफॉरमेशन अच्छी से सब आम जापर देन वेरियस नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स इंटरनेट सोर्सेस डिफरेंट सोर्सेस रु जापर नेशनल इंटरनेशनल जमती आम डिजिटल लाइब्रेरी गोटे अच्छी ऑनलाइन लाइब्रेरी बा डिजिटल लाइब्रेरी से थ्रू आम कौन कर इनफॉरमेशन पाइपर आमर किसी गोटे प्रॉब्लम अच्छी बा एजुकेशन रिलेटेड किसी गोटे डाउट अच्छी आम से थ्रू ता विषय डाटा कलेक्शन कर तो सही हिसाब से जहाँ भी आमर रिसर्च प्रॉब्लम अच्छी बा जो टॉपिक ऊपर आम रिसर्च करने चाहूचे ता विषय में देखिपर से थ्रू एमती अदर साइट्स अच्छी बा इंटरनेट रे बहुत गुड़े सोर्सेस अच्छी जो थ्रू जापर आर्टिकल्स पढ़ी जापर न्यूज़ पढ़ी जापर न्यूज़ पेपर जापर करेन्ट सिचुएशन रे कौन प्रॉब्लम अच्छी कौन तार सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो पारिछि ना हो पारिनि जमती कि कोरोना टाइम रे आमे सेतबेले पढ़िले ही जापर जे वैक्सीन आमर क्रिएट हो पारिछि बा क्रिएट हो पारिनि जेतबेले वैक्सीन क्रिएट हैला केते टाइप रो बा केते डिफरेन्स रहिला जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन सब रहिले से गुडाक कोठी को फील्ड रे केमिति काम करूची को एज को जेनरेशन पाई बा को एज ग्रुप पाई का केमिति काम करूची को वैक्सीन तो ए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आमे कोन हेले पाई परबा तो सेमती आमे कोन कर परबा एई सब सोर्सेस रु न्यूज़ पेपर रु हो इंटरनेट रु हो जर्नल्स आर्टिकल्स हो बा अदर रिसर्चर मानकर रिपोर्ट रु हो आमे एई सब जिंस गुडाक कोन कर परबा जानि परबा बा सही अकॉर्डिंग आम लिटरेचर रिव्यू कर परिबा तो यहाँ थिला सोर्सेस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर देन आम देखिबा मेथड्स ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर तो मेथड कौन रही फर्स्ट है नैरेटिव रिव्यूज बा नैरेटिव मेथड जो थे कि इट अटेम्प्ट्स टू समराइज एंड सिंथेसाइज व्हाट हैज बीन रिटन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक providing a qualitative interpretation of prior knowledge narrative reviews कर परिबा जोठी हमें qualitative interpretation गोटे कर परिबा quality interpret कर परिबा quality जान परिबा then argumentative reviews selectively examine literature to support or refute an argument गोटे argument गोटे literature select करबा जो थरे कि कोन करियबो argument through रे तार से रिव्यू करहब से लिटरेचर टाको अजम्पशन और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड इन द लिटरेचर जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी कौन है लिटरेचर अच्छी तार रिसर्च हो सारी ता ऊपर आम रिव्यू दे परबा आर्गुमेंटेटिव रिव्यूज जाको आम कहे देन हिस्टोरिकल रिव्यूज ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ एन इश्यू कंसेप्ट थियोरी और फेनोमेना विद इन द स्कॉलरशिप ऑफ ए डिसिप्लिन ओवर टाइम प्लेसिंग रिसर्च इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट गोटे इश्यू उपर गोटे फेनोमेनन उपर तार इवोल्यूशन केमती प्रॉब्लमटा केमती थिला एबे प्रेजेंट सिचुएशन रे केमती आसी पहुंची को स्टेज आसी पहुंची सेटा हला हिस्टोरिकल रिव्यूज आमे ए जो जिंसटा कहबा एटा हिस्टोरिकल रिव्यूज भितरे जीवो then methodological reviews it focuses on analyzing how research was conducted providing a framework for understanding at different levels research टा केमिति conduct हेची को level रे सेटा जीवो methodological reviews then systematic reviews provide an overview of existing evidence pertinent to a clearly formulated research question using pre-specified and standardized methods to identify and critically appraise relevant research एटी गोटे टोटल सिस्टमेटिक रिव्यू आमे जेतेबेले ओवरऑल रिव्यू गोटे दउचंदी सेटा सिस्टमेटिक रिव्यू भितरे जीवो जोटा कि रिसर्च क्वेश्चन थिबो तार प्री स्पेसिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज मेथड गुडाक थिबो आइडेंटिफाई करूथबो सेटा आमे कहउथबा जेतेबेले देन क्रिटिकली अप्रेज रिलेवेंट रिसर्च
ये सब गुड़ा जितेबाला आम एक्सप्लेन कर सिस्टमेटिक रिव्यूज भितर जीव बा सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन भितर जीव। तो ये आ गोटे एक्सट्रा जिनस आम देखी ना स्टेप्स ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो जितेबाला आम गोटे रिव्यू कर गोटे लिटरेचर को बा जितेबाला गोटे आमर फर्स्ट कहला रिसर्च प्रॉब्लम गोटे आम नेले बा टॉपिक गोटे आमर रहिला सेही अकॉर्डिंग आम कौन करबा फर्स्ट लिटरेचर रिव्यू करबा। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट ए टॉपिक गोटे टॉपिक सिलेक्ट देन सर्च एंड चूज लिटरेचर सर्च करबा डिफरेंट सोर्सेस रु देन केते गुडे लिटरेचर भितर काहा को लिटरेचर टा को हमको रिव्यू करबार अछि सेटा को चूज करबा देन एनालाइज एंड इंटरप्रेट लिटरेचर सेटा को एनालाइज करबा ता विषय रे फर्दर नॉलेज गेन करबा देन इंटरप्रेट करबा ए सबुर पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन कौन ची गैप टा को फाइंड आउट करबा देन रिव्यू राइटिंग आमे तादरु फाइंडिंग्स कौन पाइले सेटा को लेखिबा तार रिव्यू करबा। तो ये सब एटा थिला स्टेप्स ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो एथिरे आमे देखिले नीड सोर्सेस मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। देन आमे देखिबा सैम्पलिंग सैम्पलिंग फर्स्ट आमे देखिबा सैंपल सैंपल कहले कौन बुझिबा आमे जेतेबेले गोटे प्रॉब्लम नै छे वुमेन एजुकेशन सेतेबेले आमे कौन करबा रिसर्च जेतेबेले करबा वुमेन मान को ही आमे कौन करबा सेंटर रे रखिबा बा तांको ही तांकर प्रॉब्लम कौन रही तांकोटो ही फर्स्ट बुझिबा। तो जेतेबेले आमे से वुमेन मान को ठू बुझिबा बा तांको प्रॉब्लम को कंसीडर करबा सेतेबेले आमे ताको सैंपल बोली कहबा। तो इट इज ए कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ए पार्ट और सबसेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन वुमेन पॉपुलेशन यार ऊपर ही आमे रिसर्च करबा। तो ये हला हमर सैंपल which is selected for the purpose representing the population sample obtaining by collecting information only about some members of a population। जेतेबेले टोटल मास वुमेन हैला हमर पॉपुलेशन रे जिवे जेते वुमेन रहिले सब पॉपुलेशन रे जिवे तादरु जेतेबेले आमे गोटे ग्रुप को काट दवा सेतेबेले आमे ताको सैंपल बोली कहबा। तो एबे देखिबा सैम्पलिंग सैम्पलिंग कौन इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन मास वुमेन हेले बा जेते वुमेन रहिले सब गुडा जिवे मास वुमेन अमन रहिले पॉपुलेशन बा जेते वुमेन रहिले सब गुडा को हमें पॉपुलेशन बोली कहबा बा रिसर्च करछि जहा ऊपर सेटा पॉपुलेशन मास वुमेन ता भीतर गोटे ग्रुप बा स्मॉल मेंबर्स ऊपर जितेबाला आम रिसर्च करवा बा तांकोठू डाटा कलेक्ट करवा सेतेबाला स्मॉल बा गोटे ग्रुप को आम कहले कौन सैंपल। तो ये सैंपल रो जितेबाला कौन करवा सिलेक्ट करवा गोटे सॉरी जितेबाला होल पॉपुलेशन रू बा टोटल वुमेन मानक भितर केते जण वुमेन मानक आम सिलेक्ट करवा सैंपल हिसाब रे। तो सेही प्रोसेस टा को आम कहवा सैंपलिंग। सपोज आमर टोटल वुमेन अच्छा 100 आम जितेबाला तांको भितर ओनली 20 जन को नबा बा तांको ऊपर आम रिसर्च करवा गोटे स्मॉल पॉपुलेशन उपरे सेटा को आम कहूचे बा स्मॉल पार्ट उपरे सेटा को आम सैंपल बोली कहबा। तो सैंपलिंग पाई population is divided into a number of parts called sampling units। जेतेबाला टोटल पॉपुलेशन आम 20 करी 5टा ग्रुप रे डिवाइड करदेले ए सब ग्रुप गुडा को आम कहबा सैंपलिंग यूनिट्स। The process of sampling makes it possible to draw valid inferences or generalizations on the basis of careful observation of variables within a small portion of the
population एटा हम पे इजी हबो जेतेबेले हमें कोन करछे गोटे सैंपल उपरे रिसर्च करछे टोटल पॉपुलेशन बा मास उपरे रिसर्च करबाटा हमको डिफिकल्ट हो जाउची बा रिसर्च करबाटा तार फाइंडिंग्स टा एते हमको करेक्ट मिल पारिबनी सेतेबेले हमें कोन करछे बा करेक्ट मिलिबा पई हमें कोन करछे गोटे ग्रुप उपरे बा गोटे स्मॉल पॉपुलेशन उपरे हमें कोन करछे रिसर्च हमरो करछे बा ऑब्जर्वेशन रे रखिछे स्मॉल पॉपुलेशन को ताकू हमें कहूचे सैंपल बोली तो सेही प्रोसेस टा को कहा जाउची सैम्पलिंग सेही जो ग्रुप हमें फाइंड आउट करबा जो 20 जन 100 भितरु 20 को हमें फाइंड आउट करबा सेटा को केमिति केते 20 जन को बा को जन को से 20 भितर ऐड करबा सेही प्रोसेस टा को हमें कहूचे सैम्पलिंग देन देखिबा पर्पस ऑफ सैम्पलिंग लार्ज पॉपुलेशन कैन बी कन्वीनियंटली कवर्ड सैम्पलिंग थ्रू रे कौन हम लार्ज पॉपुलेशन कन्वीनियंटली कवर हो पारे स्मॉल पॉपुलेशन उपरे हम कौन कर पारिबा सैम्पलिंग कला द्वारा टोटल पॉपुलेशन डिवाइड हो जाउचंती जहाँ द्वारा कि गोटे लार्ज पॉपुलेशन कौन होची कवर हो पारछि देन हेल्पफुल व्हेन यूनिट्स ऑफ एरिया आर होमोजेनस यूनिट्स ऑफ एरिया जितेबाला होमोजेनस एटा सेतेबाला हेल्पफुल देन टाइम मनी एंड एनर्जी सेव्ड तो मास को हमें ऑब्जर्व करबा सेतेबाला हमर जेतिकी टाइम जीवो जेतिकी मनी बा एनर्जी जीवो जेतेबाला गोटे स्मॉल ग्रुप बा सैंपल को ऑब्जर्व करबा ताठू कम हमर टाइम मनी एंड एनर्जी यूज हो तो एठी हमर सेव हैला टाइम मनी एंड एनर्जी तो ये पर्पस यूज्ड व्हेन द डाटा इज अनलिमिटेड जेतेबेले डाटा अनलिमिटेड अच्छी सेतेबेले कौन करहबो एटा यूज करहबो तो एटा थिला पर्पस ऑफ सैम्पलिंग देन देखिबा मेथड्स मेथड्स ऑफ सिलेक्शन केमिति हमें ग्रुपिज्म करबा बा सैंपल केमिति सैम्पलिंग यूनिट्स केमिति क्रिएट करबा तो ये टू टाइप्स रो गोटे है प्रोबाबिलिटी आ गोटे है नॉन प्रोबाबिलिटी तो ये सैम्पलिंग मेनली है टू टाइप्स रो सैम्पलिंग वन इज प्रोबाबिलिटी देन नॉन प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग तो प्रोबाबिलिटी कौन ए प्रोबाबिलिटी सैंपल इज वन in which each member of the population has an equal chance of being selected equal chance but in a non probability sample a particular member of the population being chosen is unknown एटा ला unknown एटा ला equal chance मिलिबो तो ये प्रोबाबिलिटी रे हमर रहिबो रैंडमनेस रैंडमली हमें सिलेक्ट करबा इन नॉन प्रोबाबिलिटी सैम्पलिंग इट रिलाइज ऑन पर्सनल जजमेंट ये दुटा वर्डिंग मन रखिया पड़ो नॉन प्रोबाबिलिटी रे पर्सनल जजमेंट उपरे डिपेंड करूची हमें काहाकू सैंपल हिसाब रे नबा बा को मेंबर को चूज करबा किंतु प्रोबाबिलिटी रे सेमती किछि नाही रैंडमली हमें जहा को नहीं ताको नहीं परबा गोटे सैंपल क्रिएट कर परबा तो हमरो सिलेबस रे स्पेसिफिकली देछि केतेटा पर्टिकुलर केतेटा सैंपलिंग विषय रे हमें पढ़िया पई जोटा कि हमरो इंक्लूड अछि कोथरे ना प्रोबाबिलिटी सैंपलिंग भीतर आछि प्रोबाबिलिटी सैंपलिंग भीतर हमरो आछि सिंपल फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग सेकेंड वन क्लस्टर सैंपलिंग
Third one, systematic sampling. Fourth one, cluster sampling. 5 रहा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, एटा प्राय तो मेंशन न थाए। तो आमर सिलेबस रे अच्छी यही 4 टाइप रो सैम्पलिंग विषय रे डिस्कशन करने। तो ये सब गुड़ा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भितर जाउची। एटा मन रखिया पड़िबो सिंपल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओ एठी क्लस्टर सैम्पलिंग दीटा है, गोटे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, ये चार्टा अच्छे हमारा सिलेबस रे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रे हमर जीव पर्पसिव सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये आमर डिस्कस करिवार अछि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अंडर रे जो गुड़ा जाउची। तो फर्स्ट देखिबा सिंपल सैम्पलिंग बा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडम सैम्पलिंग कहले कौन बुझिबा, इन दिस ऑल मेंबर्स हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडमली सिलेक्ट करा जिवो, मन इच्छा गोटे गोटे मेंबर को सिलेक्ट करा जिवो। इट प्रोवाइड्स एन अनबायस्ड क्रॉस सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जेहेतु रैंडमली सिलेक्ट कराउची अनबायस्ड रहिबो। फॉर एग्जांपल, we wish to draw a sample of 50 students from a population of 400 or 20 women from a population of 100 women रू हमें 20 को कौन करवा ड्रॉ करवा। तो ये हमें कौन करवा, चीट करके गोटे पट रे पकई दवा 100 टोटल 100 ता गोटे गोटे चीट उठेबा, ता भितरु 20 जन को सिलेक्ट करवा। तो यहाँ है रैंडम सैम्पलिंग। देन आसीबा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फॉलोइंग ग्रुप्स by some characteristic and from each of these group random members are selected. गोटे टोटल पॉपुलेशन को हमें डिवाइड कर दबा छोट छोट ग्रुप रे, जहाँ को हमें अदर नेम रे स्ट्राटा बोली मध्य कहते, जो ग्रुप स्मॉल ग्रुप बा स्ट्राटा। कैरेक्टरिस्टिक सेम अनुसार हमें कौन करबा, डिवाइड करदेले बा ग्रुप तांको करदेले। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ओमेन नहीं चे हमें देखिले टोटल एरिया अनुसार तांको डिवाइड करदेले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो यहाँ एरिया अनुसार डिवाइड करदेले। सेमती प्रोफेशन अनुसार आम डिवाइड कर परबा, किए टीचर, किए डॉक्टर, किए इंजीनियर, से अनुसार आम जो डिवाइड करछन भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक हम, से अकॉर्डिंग डिवाइड करहब। तो ये गोटे फॉर्मूला आमर यूज हुए, जोटा कि सैंपल साइज बाय टोटल पॉपुलेशन into 100, sorry, into total number।
तो ये आम देखा ये फॉर्मूलाटा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग सपोज आम नहीं 100 वोमेन है आमर पॉपुलेशन है 100 वोमेन से थ्रू नॉर्थ रू आसुचंती 20 साउथ रू 35 ईस्ट रू 45 ना यहाँ नहीं जावा 10 नॉर्थ रू 10 एले टोटल है वेस्ट रू हो गले 10 तो ये सब हो गला गोटे गोटे स्ट्राटा तो ये सैम्पलिंग फ्रैक्शन आम केमती काउंट करवा सैम्पलिंग फ्रैक्शन सैंपल साइज बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू total number in the strata total number in strata तो ये कौन जदि सैंपल साइज हमर 20 अच्छी 20 है सैंपल साइज देन फ्रॉम ईच स्ट्राटम सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज नॉर्थ रू केते पाइबा 20 बाय टोटल पॉपुलेशन है आमर 100 टोटल नंबर इन स्ट्राटा है गला 10 आम एथरू केते जन को नबा 2 देन से अकॉर्डिंग आम हिसाब करवा तो यहाँ है नॉर्थ देन साउथ रो देखिबा साउथ है 20 बाय 100 इंटू 35 गला 7 साउथ ईस्ट 20 बाय 100 इंटू 45 हेल्ले केते होची 9 ईस्ट सेमती वेस्ट है 20 बाय 100 इंटू 10 हेल्ले एटा हो गला 2 तो टोटल केते हो गला 20 तो नॉर्थ रू आमको दी जन को नबा पड़ो साउथ रू 7 ईस्ट रू 9 वेस्ट रू 2 तो ये अकॉर्डिंग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रे एमिति आमको मेंबर उठेबा को पड़ो जदि टोटल आमर सैंपल साइज 20 अच्छी ताहले आमको ये अकॉर्डिंग नबा को पड़ो तो यहाँ है फॉर्मूला सैम्पलिंग फ्रैक्शन है सैंपल साइज बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू टोटल नंबर इन स्ट्राटा तो यहाँ गला आमर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग देन आसीबा क्लस्टर सैम्पलिंग तो क्लस्टर सैम्पलिंग बा जहाँ को आम अदर नेम कहती एरिया सैम्पलिंग A researcher selects sampling units at random and then does complete observation of all units in the group. For example, जमती कि आम रिसर्चर आम गोटे ले किंडर गार्डन स्कूल्स रे बा स्टूडेंट्स गुड़ा को आम कौन करवा रिसर्च रे इंक्लूड करवा तो सिलेक्ट करवा किंडर गार्डन स्कूल्स बा केजी स्कूल्स आम नहीं गले 20 स्कूल्स सॉरी
स्कूल्स नहीं गले 35टा केजी स्कूल नहीं गले देन स्टडी ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ 35 स्कूल्स सबू चिल्ड्रेन मान को स्टडी कले तो ये कौन हम क्लस्टर सैम्पलिंग रे द यूनिट्स ऑफ सैम्पलिंग कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल केसेस रे एठी इनवॉल्व मल्टीपल केसेस इनवॉल्व रहिबो. It is also known as area sampling as the selection individual member is made on the basis of place residence or employment. एठी सब गुडा को क्लस्टर सैम्पलिंग रे इंक्लूड करा गला. देन हमें आसीबा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. Each member of the sample comes after an equal interval from its previous member. For example, for a sample of 50 students, the sampling fraction is 50 by 100 or 50 by 400. 50 by 100, that is 1 by 2. Select one student out of every 2 students in the population. The starting points for the selection is chosen at random. एटी randomly चूज करावा. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रे एटी रेशियो नहीं से अकॉर्डिंग चूज करावा. तो एटा थिला मेथड्स ऑफ सिलेक्शन. तो ये आमर कंप्लीट है सैम्पलिंग. तो ये आम मेथड ऑफ सिलेक्शन रे देखले रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो केमिति आम सैम्पलिंग बा सैंपल कलेक्ट करुचे बा ग्रुपिज्म बा ग्रुप केमती फॉर्मेशन करुचे बा सैम्पलिंग यूनिट्स केमती फॉर्मेशन करुचे मेथड्स कौन रही.